डिस्कशन करबा। आज आम आलोचना करबा प्रेशर ग्रुप्स सुंदर सेशन एथर यूट्यूब रे भी आम आलोचना करि परिबा। परवर्ती समय रे वो यूट्यूब रे भी आलोचना करिबारे ध्यान देव। सौम्य वेलकम। तो आम देखा देख पिला माने प्रेशर ग्रुप कौन है। आज टॉपिक सुंदर टॉपिक फॉर मेंस एग्जाम पाई। ए प्रेशर ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। ये जनकर कथा नुहे, ये समस्त माने कॉमन इंटरेस्ट पाई जो ग्रुप काम करे जो ठारे अनेक लोक रहंती जो माने तांकर काम होची टू एक्टिवली participate for the promotion of the interest of the common people. Normally माने प्रेशर पकाती तो प्रेशर ग्रुप तार नाम कारण एमिति हेछि हला। इट इज कॉल्ड सो एज इट अटेम्प्ट टू ब्रिंग ए चेंज। इ कोन करे चेष्टा करे चीज चेंज आने पई। समाज रो चेंज हे पारे बा पॉलिटिकली चेंज हे पारे बा इकोनॉमिकली चेंज मध्ये हे पारे हला। कोन हुए इन पब्लिक पॉलिसी बाय exerting pressure on the government ऊपर प्रेशर पकेबा चाप पके थाए हला। तनो ये बहुत इंपोर्टेंट तुम मान को पई रहइबो एंड इट एक्ट्स एज ए रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मेंबर हला। तनो ये गवर्नमेंट को प्रेशर पके काम हासिल करे कायनो गवर्नमेंट सबले मने रखिबो गवर्नमेंट कोन करे लॉ तयारी करे हला ताकू इंप्लीमेंट करि थाए। तनो गवर्नमेंट आम जो सरकार आमर जो डेमोक्रेसी रे जेमिति का हमें कहि परिबा डेमोक्रेसी रे हमर लोक मानकर इंपोर्टेंस को वेलफेयर ऑफ द पीपल को हमें ध्यान देबा। तो ठीक सेमिति द प्रेशर ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड द इंटरेस्ट ग्रुप वेस्टेड ग्रुप ताको मध्ये कोन कुआ जाय परिबो प्रेशर ग्रुप और वेस्टेड ग्रुप मध्ये कुआ जाय थाए। ओके देन and they are different from the political party माने political party भलिया न। नॉर्मली हम देश रे देखा जायछि political party माने बहुत कथा कहंती काम कम कथा अधिक इलेक्शन पूर्वरु गोडो हाथ मुंड सबु ता से माने हम यदि देखिबा से माने से भलिया आचरण करिथांती। बट किंतु प्रेशर ग्रुप माने से न प्रेशर ग्रुप माने से न माने अमक दबु ढमक दबु पॉलिटिकल पार्टी मानकर काम होजी से। They are different from the political party को माने प्रेशर ग्रुप माने एज दे नाइदर कॉन्टेस्ट इलेक्शन कारण से माने इलेक्शन स्टैंड करंती ना ला नॉर ट्राई टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर। तांकर लक्ष्य होची केवल आमे कहि परिबा जे से माने केवल लोकंको पई काम करथन जो माने प्रेशर ग्रुप। They are concerned with the specific program and issue and their activities are confined to the protection and promotion of interest of their member by influence the government। सरकार को चाप पकई ला सरकार को ऊपर से माने प्रेशर करिकी से माने कोन करंती काम हासिल करा पे चेष्टा करथांती लोकन को पाई स्पेसिफिक प्रोग्राम ऊपर हो बा स्पेसिफिक इश्यू ऊपर हो ला तांको काम को से माने करिथांती हला फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन लोक मान को पाई फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ताको हमें मन रखिबा हला। एंड हमें कौन कहि परिबा the pressure group influence the policy making policy implementation in the government through legal and legitimate method like lobby करके हो बा पब्लिसिटी करके हो प्रोपागेंडा करके हो पिटिशन माध्यम रे हो डिबेट माध्यम रे हो
कॉन्टैक्ट माध्यम रे हो विथ द लेजिस्लेटर एंड समर एमाने प्रेशर करिथांती लोकंको पाई ही काम करिथांती तेणु एमाने होछंती प्रेशर ग्रुप तेणु प्रेशर ग्रुप इज ए ग्रुप of people who are organizedly actively they promote and defend their common interest in front of the government सरकार को आगरे सरकार को सामनारे ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି डिफेंड କରିଥାନ୍ତି then technique used by the pressure group कौन कौन टेक्निक तांकर थाए हमें जानिबा तांकर टेक्निक कौन कौन थाए the pressure groups resort to the three different technique in securing their purposes तीन प्रकार थाए election placing in public office person who are favorably disposed toward the interest at the concerned pressure group seeks to promote ला एटा इलेक्शन माध्यम रे ସେମାନେ कौन करंती प्रेशर करी थांती ई भी हिपारे and तापर हिपार लॉबी करिकी persuading the public officer whether they are initially favorable disposed towards them or not to adopt or and enforce the policies that they think will prove more beneficial to the interest ये मध्य हे पारि थाए गुटेला इलेक्शन माध्यम रे बा गुटे लॉबी माध्यम रे another one is propaganda माध्यम रे मध्य propaganda माध्यम रे मध्य आमे मन रखिबा and influence the public opinion thereby gaining an indirect influence over the government since the government in a democracy is substantially affected by the public opinion लोक माने जाहाकू बाछिबे हला जाहाकू बाछिबे तो से माने शासन करिवे आम देश जो सिस्टम रहिछि आम देश रे जो ट्रेडिशन रहिछि हला जो माननको पाखरे पब्लिक ओपिनियन थियो जो मानको पाखरे डेमोक्रेसी मान इलेक्ट हेथिबे जो माने लोकंक द्वारा आदृत हेथिबे हला से माने कोन करंती से माने शासन करथांती आम गणतंत्र रे आम राष्ट्र रे ठीक अछि एको हमें मन रखिबा then another one is आमे कहि परबा characteristic of the pressure group कोन characteristic होइछि based on certain interest each pressure group organize itself keeping in view certain interest and thus tries to adopt the structure of power in the political system ये ही based on the certain interest तांकर किछि certain interest थाए प्रेशर ग्रुप मान कर जे एथि पय माने काम करिवे कि देखिबो तुमे जानि थिबो कि जो माने इकोनॉमिक्स पय काम करथांती बा तुमर पॉलिटिकली भी काम करथांती बा समाज पय काम करथांती प्रेशर ग्रुप मान then another one is use of modern as well as traditional means ता माने होछि जे they adopt technique like financing of political party परवर्ती समय जेमती आमे कहि परिबा बीजेपी को कुआ जाउची जे अदानी अंबानी कर ये पार्टी काहे कि सरकार को आगरु सने पैसा देई थांते परवर्ती समय रे सने सेही तुमर अदानी हो अंबानी ग्रुप को माने कोन करंती सहाय्य ढेर मात्रा रे सहाय्य करि थांते ढेर मात्रा रे सहाय्य करि थांते they adopt technique like financing political party sponsoring their close candidates जो माने ताको क्लोज कैंडिडेट थिबे सेमन को मध्य माने कोन करथांती स्पॉन्सर करथांती माने फाइनेंशियल हेल्प करथांती at the time of election and keeping the bureaucracy so satisfied their traditional means include exploitation of caste creed and religious feeling to promote their interest हला विभिन्न वे रे से माने कोन करिथांती ना प्रेशर ग्रुप माने हला जो माने पॉलिटिकल पार्टी जो माने शासन करिवार थाए सेमान को ऊपर प्रभाव पके एमानकर काम होची टू इन्फ्लुएंस परिवर्तन करि देबा पय माने चेष्टा करथांती गोटे चेंज कर देबा पय चेष्टा करथांती ला सी पॉजिटिव वे हो बा नेगेटिव नॉर्मली प्रेशर ग्रुप गुडा को आम देश रे जो सिस्टम चली छी इट इज नॉट पॉजिटिवली इट इज नेगेटिवली दे आर इन्फ्लुएंस resulting out of the increasing pressure and demands of the research याको हमें मते कोइ परिबा ठीक अछि याको मते हम कोइ परिबा the scarcity of research claims and counterparts तो counterparts claims and counterclaims on the resources from different and competing sections of the society leads to the rise of pressure जेहेतु हमर रिसोर्स बहुत कम अछि ला तो एठी हमें कोन करू
the resulting out of the increased pressure and demand of the resource ର demand ପାଇଁ pressure group ମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ଆମର ପାଖରେ resource ର କମ ରହିଛି ତେଣୁ resource ଅଧିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ pressure group ମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି and inadequacy of political party ମାନେ pressure group are primarily a consequence of inadequate ହେଲା तो एटा को मध्य में कही परिबा प्रेशर ग्रुप आर प्राइमरीली consequence of inadequate of political party then represent changing consciousness for instance the increase in food production or industrial goods does bring a change in the way individuals and groups look at the world and the stagnation of in production leads to fatalism but increase in production leads to demand protest and formation new pressure group ଯେତେବେଳେ ତୁମର industry case ରେ ହଉ ତମର food production case ରେ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ହୁଏ ଅଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି they work for the people ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା it may be for the ତୁମେ କହିପାରିବ food production or ତୁମର industrial ମାନେ ତୁମ agriculture case ରେ ହଉ ବା ତୁମର industry case ରେ ହଉ ବା service case ରେ ହଉ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା କାମ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି and ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଟିକେ ରହିଯିବା ପ୍ଲେ ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ନାଇଁ ଏଇଟା କ୍ଲାସରେ ଅଛି ପୁରା ହଁ 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 ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଭଲ କଲେ ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ହେଲା ତ टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप को माने हमर प्रेशर ग्रुप भाବରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ institutional interest group ये भी गोटे प्रकार these groups are formally organized which consist professionally employed person जो माने employed person देखो these group are formally organized ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି employed person ये गोटे ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ they are the part of the government machinery and try to exert their influence ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ତୁମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଇଏସ୍ ଆସୋସିଏସନ आईपीएस एसोसिएशन अच्छी है स्टेट सिविल सर्विसेज एसोसिएशन जो ओएस मानकर एसोसिएशन तुमरो कोई परबो एडे होमगार्ड मानकर एसोसिएशन पुलिस मानकर एसोसिएशन अछि कि नहीं मते को अछि कि नहीं को हला ए माने गुटे गुटे एसोसिएशन भाबरे काम करिथांती हला अछि कि नहीं रे मना नीर सम्य and whenever such an association raises protest it does so by constitutional means and the accordance and in accordance with the rules and regulation माने हम भारत रे हो बा हम ओडिसा रे हो बा विभिन्न राज्य रे हो से माने काम करी थांती टू इन्फ्लुएंस देखिबो जनक विपक्ष रे जदी कोन सी स्टेप के नै गला कि काकू गाली कला बा पार्टी तुन कला माडो पिटिला पूरा ग्रुप हिग्री समासनी तो से माने गुटे प्रेशर ग्रुप से माने तांको पई काम करती माने आईएस कोटे माडो हे गला तो आईएस कोन आईएस ऑफिसर माने कोन तांको ग्रुप अछि ताना काम करबे नाही आईएस माने आईपीएस माने कर कथा कहबा हमर ओएस माने कर कथा कहबा सेक्रेटरी माने कर कथा कहबा सेक्रेटरी कहला हमर पंचायत सेक्रेटरी कथा कहउछि एंड किमा बड़ बड़ तमे जदी देखिबो ऑर्गेनाइजेशन सब अछि समान कर श्रमिक मानकर एसोसिएशन अछि ड्राइवर मानकर भी एसोसिएशन अछि
प्रेशर पॉकेट शिक्षक मानकर एसोसिएशन अछि किंतु बेकारी मानकर एसोसिएशन नाही. Then associational interest group. These are organized specialized group formed for interest articulation but to pursue limited goals. These include trade union, organization of businessmen and industrialists, and civic group. Some examples of the associational interest group in India are Bengal Chamber of Commerce and Industry, Indian Chamber of Commerce, and trade union as the All India Trade Union Congress, All India Trade Union Congress, Teacher Association, Student Association, such as National Student Union, la NSUI, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୋସିଏସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ. जो इंटरेस्ट ग्रुप कहले माने मध्य गोटे गोटे pressure group. Then atomic interest anomic. By anomic pressure group we mean more or less spontaneous breakthrough into the political system from the society, such as riots, demonstration, assassinations. La एगुड़ा गला anomic interest group. तांकर काम होछि हला सेमाने कोन करबे तुमरो रियट करबे, दंगा करबे, हला पिकेटिंग करेंगे, आशास को मारिदेवे, ये सब प्रेसर करवा करिकी से काम हासिल करने चेष्टा करते. Then known associational interest group. These are the kinship and lineage group of ethnic, regional, status and class groups that accumulate interest on the basis of individuals, family and religious set. These groups have informal structure. These include caste group, language group and etc. कास्ट को नहीं ही पारे, लैंग्वेज को ही पारे, तो माने इनफॉर्मल फॉर्मल समान नुहंती, रिलीजन को नहीं की, रीजन को नहीं की, क्लास को नहीं की, ए माने काम करी थांती. ये मध्य गोटे प्रकार. एंड प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया हम जे देखिया बिजनेस ग्रुप भितर आसीबो पिला माने मन रखिबा जे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोसिएट चेंबर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, आसोचाम ताको कहा जाए, और एफआई एफडीए मध्य फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन, ए माने मध्य गोटे गोटे प्रेशर ग्रुप जाको में बिजनेस ग्रुप भाबरे नै थाते. ट्रेड यूनियन भाबरे में नै परबा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा एंड भारतीय मजदूर संघ, ए माने होछ ट्रेड यूनियन. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो बा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कांग्रेस एंड मजदूर सभा हो पारे, भारतीय मजदूर सभा भारतीय जनता पार्टी में कही था. एंड नेक्स्ट वन इज दियर प्रोफेशनल ग्रुप, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई, एरा हो तुम उकिल मानकर, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स, ओ इंडिया माने AIFUCT. देन एग्रारियन ग्रुप, ऑल इंडिया किसान सभा माने कृषक मानकर ये मध्य ग्रुप, ए माने गोटे गोटे कोन प्रेशर ग्रुप. They work for the welfare of the common interest of the people. Then another one is students organization, ये मध्य गोटे प्रेशर ग्रुप. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, एमाने गोटे गोटे. अखिल भारतीय तो भारतीय जनता पार्टी, तो एमाने कोन स्टूडेंट एसोसिएशन, एबीवीपी कहा जाए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद. Then religious group, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, विश्व हिंदू परिषद, जमात इस्लामी तुम मुसलमान मानकर, विश्व हिंदू परिषद तुम हिंदू मानकर, हला कास्ट ग्रुप, ए माने गोटे गोटे कौन बुझी बुझीला कि नहीं, अरे बुझीला कि नहीं, बुझीला मना निरोज सौम्य. कास्ट ग्रुप रे हरिजन सेवक संघ, नादार कास्ट एसोसिएशन, एमाने गोटे गोटे प्रेशर ग्रुप, एमाने कास्ट टाइप रो कास्ट ग्रुप रे आसीबे. कास्ट ग्रुप रो ये होजंदी गोटे गोटे प्रेशर. लिंग्विस्टिक ग्रुप हला कोन तमिल संघ, आंध्र महासभा, जादव महासभा, हला गोटे ये गोटे कोन गोटे तमरा ग्रुप रो. ट्राइबल ग्रुप भितरे तमरा आसी जीवो कोन ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर्स इन त्रिपुरा, यूनाइटेड मिजो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइबल लीग ऑफ आसाम, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, एमाने गोटे गोटे कोन ट्राइबल ग्रुप प्रेशर ग्रुप.
देन आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप है कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर इंडिया एगेन्स्ट करप्शन ये मध्य गोटे तुम आइडियोलॉजी बेस्ड देन आनमिक नक्साइल ग्रुप जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट यूनाइटेड लेबर फ्रंट ऑफ आसाम डाल खालसा एमाने गोटे मध्य देन एमाने कौन करती फंक्शन रोल एंड इंपोर्टेंस ऑफ द प्रेस एमानकर आवश्यकता कौन सेमानकर गुरुत्व कौन पाए सेमानकर काम कौन कौन काम सेमाने कर इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन तांकर काम pressure group bring the demand and needs of the people to the notice of the decision maker जो माने लो तैयार करते नेक्स्ट वन इज हमर कोई परिबा जे एजेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन प्रेशर ग्रुप्स आर एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इन सो फार as they influence the orientation of the people toward the political process. These groups play a vital role, man, very important role as two-way communication links between the people and the government. अरे लोक मानक पई सरकार आ सरकार होजी लोक मानक पई डेमोक्रेसी रे गणतंत्र रे गणतंत्र होची लोक मानकर कोन स्टॉक हे गेला रे स्टॉप हला ना स्टॉक हे गेला कोन मना then pressure group play a vital role in the legislative process not only as the important structure of the interest articulation but also as active agency engaged in lobbying with the legislator for securing desired law and or amendment in laws and policy of the government एमानक माध्यम रे सरकार मध्य बदली पारे परिवर्तन हे पारे नियम को भांगी पारे तो एमाने होछंती सेति पई प्रेशर ग्रुप देयर वर्क इज टू गिव प्रेशर टू द लॉ मेकर और द लेजिस्लेचर जो माने लॉ तैयार करंती दे मे अमेंड हला दे मे सिक्योर द लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल and right from the time of the preparation of election manifestos or various political parties to the passing of the law by the legislature, the pressure group remain associated with the process of rulemaking. Mane, they are not directly, but they may enjoy the government indirectly. Karan they pressurize the government. They pressurize the lawmaker. Lawmaker मानकु से माने प्रेशर करिया पई प्रयास करिथांदी चेष्टा करिथांदी then pressure group in administration pressure group are actively involved in the process of administration law making case रे नो केवल execution रे मध्य through lobby with the bureaucracy the pressure group are generally or usually in a position to influence the process of the policy implementation pressure group हला pressure group माने bureaucrats मानको ऊपर मध्य pressure पकेइथा तुम्हें गोटे कहवा चाहिए थरे गोटे लेडीज टे सी माने पूरा मंत्री मानक ऊपर प्रेशर पकाते मंत्री मानक ऊपर चिंता कर हाई लेवल देन रोल इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर वुड ट्राई टू यूज द जुडिशियल सिस्टम फॉर सिक्योरिंग एंड सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट ग्रुप ऑफन सीक एक्सेस टू द कोर्ट फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एज वेल एज द गेटिंग डिक्लेयर्ड a particular decision or policy on constitution basically among the सरटा होबाटा ठीक कष्ट हो जाए कारण in India the judiciary played impartial without fear without favor no fear no favor is the motto of the judiciary system in India then pressure group play a leading role in the formulation of public opinion Each pressure group is continuously engaged in evaluating such as law, rule, decision, and policy, which have a direct or indirect bearing on the interest of the representatives. तो प्रेशर ग्रुप कर भूमिका अत्यंत गुरुत्व they play very important role. It always places the pros and cons not only before the members but also before the general public for eliciting popular support as well as the catching the attention of the government. Government रो तो काम हो जी लो तैयारी करिया किंतु तक सठिक मार्ग रे हो तो परिवर्तन करिवारे जहांकर भूमिका थाए
सी हूँ तुम प्रेशर ग्रुप तेणु प्रेशर ग्रुप हेल्प इन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट consultation with affected group is the rational way to make decision a free society जी vulnerable जो मानकर आवश्यकता रही तेणु से नॉर्मली काम करथांती they try to gain public support and sympathy for their goals and their activity by carrying out information campaign organizing meeting file petition ला ए सब माध्यम रे से कोन कोन सपोर्ट मिली थाए से बा सिंपैथी से मिली most of these groups try to influence the media into giving attention to the issue अब तुम्हें जानी था the fourth pillar of the democracy is the media media माने ला fourth pillar भाव रे काम करे थांती may be हे पारे तुम electronic media or it may be mass media electronic media बा print media रा को से ना प्रिंट मीडिया दा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ना yes or no Monalisa it makes government more efficient by enhancing the quality of the decision making process the information advice provided by the groups helps to improve the quality of the government policy and legislation तो ये हुची तुम्हारा pressure group play a leading role in the formulation of the opinion and they try to influence the government को influence कौन पाए ना for the sake of the people for the welfare of the people लोगों को पाए for the sake of the people or and to improve the quality of the government they always try to get the sympathy they try to get the public support for their goals for their activity for the vulnerable society people तांको पाई से काम करते freely operating pressure groups are essential to effective function of the liberal democracy they serve the vital intermediate institution ସେମାନେ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି they assist in the dispersal नहीं ସେମାନେ directly तो माने पांति नहीं they do not receive any grant from the government but for the sake of the people से ता माध्यम रे ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭବାନ ହେଇଥାନ୍ତି but directly से जेमति चाकरिया मन को दिया जाउछि କିଛି पैसा ला से मन को କିଛି दिया जाए नाही किंतु सेमान को प्रभाव रहे सरकार गठन रे जेमति एबीवीपी कथा हमें कहि परिबा हमें एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बा विश्व हिंदू परिषद आरएसएस कथा हमें कहि परिबा वर्तमान समय रे they provide input and counter words to balance the concentration of power pressure group enable new concern and issue to reach the political agenda thereby facilitating social progress and preventing social stagnation for example the women's and the environmental movement then pressure group increase social cohesion and political stability by providing safety valve outlet for individual and collective grievance and demand माने cohesive rule माने they increase social cohesion and political stability कारण आगरु से माने जदि कोन प्रॉब्लम रहुची ताकू सॉर्ट आउट कर देले तेणु जेमति हमर इंडियन नेशनल रे बेले शत्रु भाव रे काम हे जाई थाए then pressure group help to educate people compile data and provide specific information to policy makers because they work as an informal source of information informal हुए नहीं active constructive participation numerous groups in polity helps to reconcile general interest with individual group interest तो ये होची तुमरा हम यदि देखिबा फंक्शन कौन से माने काम करते से मानकर काम होची मु कहि रखि तो मन को आउथरे to pressure group bring the demand and needs of the people to the notice the decision maker तला माने से माने प्रेशराइज करिथांती सरकार जेमिति भलो काम करिवे लोकन को पई काम करिवे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भाबरे प्रेशर काम थाए एंड प्रेशर ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन मध्ये सने काम करिथांती दे आर एक्टिवली इन्वॉल्वड हला ताको इन्वॉल्वमेंट था एडमिनिस्ट्रेशन रे एंड तुमर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन मध्ये चेष्टा करा जाई थाए बोली कहले तो तापर हमें देखिबा शॉर्टकमिंग्स ऑफ द प्रेशर ग्रुप नैरो सेल्फ इंटरेस्ट
Unlike the pressure groups in the developed country of the West, where these are invariably organized to safeguard economic, social, and cultural interest. But in India, these groups are organized around the religious, regional, and ethnic issues. Many times, factors of caste and religion eclipse the socio-economic interest. The result is that instead of serving the usual purpose in the political administrative process, they are reduced to work for narrow selfish interests। ଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ପଛେଇ ନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ, ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଖତରନାକ। narrow selfishness interest not for the sake of the people but the sake of their future, which is very very bad to the society. Then they may misuse the power. Instead of pressure groups exerting influence on political process, they become tools and implements to serve political interest। ପାୱାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। Then instability. Most pressure groups do not have autonomous existence. They are unable and lack commitment. Their loyalty is shifted with the political situation, which threaten general their welfare. They may at times resort to unconstitutional means like violence. Naxalite movement started in 1967 in West Bengal is one of such example। ତେଣୁ most pressure group they do not have autonomous existence। autonomous existence ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନୁହଁ। they are unable to and they are unstoppable and lack of commitment। their loyalty sit with the political situation। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛତା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ instability ଥାଏ, ମାନେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କର stability ନଥାଏ। they are not under the stability, they are instability। ହେଲା, ଲୋକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ ଆସିଲା ସିଚୁଏସନ କୁ ନେଇକି they may work, but it is one of the shortcoming। then another one, propagating extremism। pressure groups can allow too much influence over the government, yes, from unelected extremist minority group, which in turn could lead to an unpopular consequence। or they may propagate pressure group allowed to influence over the government। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ପ୍ରୟାସ ହୁଏ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାର by hook or by crook, from unelected extremist minority group, which in turn could lead to unpopular consequence। so it is pressure group can propagate, ହେଲା ଯୋଉ ଆମର କହିପାରିବା ଚରମପନ୍ଥୀ ଆଚରଣ କରିବା, ଚରଣପନ୍ଥୀ ଆଚରଣ। then pressure groups are now considered as an indispensable and helpful element in the democratic process। yes, no doubt, without any hesitation we can say the pressure group are very helpful। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ most of the cases it is very very important, very very helpful। the society has become highly complex and individuals cannot pursue their interests of their own। they need to the support of the other fellow begins in order to gain greater bargaining power। this gives a rise to pressure group based on the common interest। the society has become highly complex and individuals cannot pursue their interests of their own, so they need the pressure group। but in democratic politics has to be politics through consultation। ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଯୋଉ କାମ କଲା ବେଳେ କାମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିକି through negotiation some amount bargaining is also involved। bargaining ବି ଦରକାର ପଡିଲେ କରାଯାଇ ପାରେ। and it is very essential for the government to consult this organized group at the time of policy formulation and implementation। not always the pressure groups work, they may work for the welfare of the people, but sometimes it is seen, most of the time nowadays it is seen they are not working for the people, they are working for their pockets। ତାଙ୍କ ପକେଟ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ବୁଝିଲା। governance is the process of decision making and process by which decisions are implemented। governance ତାକୁ କୁହାଯାଏ। and governance can be used in several contexts such as corporate
corporate governance, international governance, national governance, and local governance. And it is the World Bank, remember here. In 1992, report entitled Governance and Development, the world set out its definition of the good governance. It defined good governance as the manner in which power is exercised in the management of a country, economic, social, resource for development. ତ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ହେଲା ତ it is participatory which is governance has participatory activity, consciousness oriented activity, accountable activity ହେଲା transparency ରହିଛି, responsibility ରହିଛି, effective ରହିଛି, and efficient, equitable and inclusive and follow the rule of law ହେଲା ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ଆମେ କହିପାରିବା. It is participatory. The good governance is participatory. The good governance is conscious oriented. And it is accountable also. It is responsible also. It is effective also. It is equitable also. It assures that corruption is minimized, the view of the minority are taken into account, and that voices of the most vulnerable in society are here in decision making. It is also responsive to the present and future needs of the society. Good governance, where it is a process of decision making, how to make a decision, and it is a process which decisions are implemented. Okay. Then good governance by United Nations Organization. कौन कहूँ good governance को लेकर? People should be able to voice their own opinion through legitimate, immediate organization or representatives. It is highly necessary. Participation of the people in a democracy is most. Without participation, there is no democracy. And this includes men and women, vulnerable section of society, backward class, minority. Participation also implies freedom and association of an expression. Okay, ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ? The people they able to voice their own opinion. It may be a legitimate immediate organization or representative. It may be men and women, vulnerable section. They should participate. ସେମାନଙ୍କୁ participate କରିବାର ଅଛି. Then another one is conscious oriented. Conscious oriented decision making ensure that even if everyone does not achieve what they want to be fullest, a common minimum can be achieved by everyone which will not be detrimental to anyone. So it meditates the foreign interest to meet the broad consensus on the best interest of a community. तो ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଆମର good governance. Good governance assures equitable society. ସମସ୍ତେ ସମାନ ସ୍ତରକୁ କେମିତି ଆସେ? ସମାନତା ରହିବା କଥା. Equal ସମସ୍ତେ. ସମାଜ ସମାନ ଆକାରରେ. People should have opportunity to improve or maintain their well-being. Then effectiveness and efficiency. Process and institution should be able to produce results that meet the need of their community. So it is highly necessary. And resources of the community should be used effectively for a maximum output, for best result. Then another one is accountability. Good governance aims towards betterment of the people, and this cannot take place without the government being accountable to the people. Accountability केसटा समस्तଙ୍କ केसରେ ଅଛି ହେଲା, but it is the people they ହେଲା work ହେଲା they work and they are accountable to the people. Then transparency, another one. There should be accessible to the public and should be understandable and monitored. It is means and free media and access information to them.
Responsibility is another character. Responsive institution and process should serve all stakeholders in a reasonable period of time. It is responsibility. Then initiative for good governance, your right to information, RTI. RTI is one of the initiative taken by the government.